Hello there, namaste. So this is a short film called Plus Minus. It was recommended to me a while ago, but I was dealing with a lot, and I'm still kind of am, but I'm trying to get a schedule down because I'm just working a ton because I'm trying to get back to India. And yeah, but I'm gonna get to this. I want to see this short film. It was been recommended multiple times, and people saying yes, I need to watch it. So yeah, I'm gonna finally check out the short film Plus Minus. हाँ हाँ मैं ही ओवर रिएक्ट करती हूँ मेरे को कोई बात समझ ही नहीं आती ना मुझे कोई बात सुननी नहीं है अपनी मम्मी को बोलो जाके सॉरी ठीक है प्लीज सॉरी उधर ही करना नहीं जी लोड लेने की जरूरत नहीं है मैंने आप ही आ जाना बिल्कुल नहीं आना स्टेशन मैं ना सिर्फ अपना सामान देने आ रही हूँ उसके बाद अगली ट्रेन से सीधा दिल्ली पापा जी के पास अच्छा फोन मैंने नहीं और बात करनी हैंग अप जिंदगी झंड कर रखी क्या है You know, I don't know why. I just like a woman when they're written, like, she's on the phone talking, being loud about everything. The men are all feeling uncomfortable. She's well aware of what type of person she is, and she just looks at the men and they have to just hide because they'll never be able to win an argument with her. I love it when women are written. It's funny and enjoyable and it seems real. Oh, I just enjoyed that moment, just them hiding because they wanted to not be involved, and now the soldier is stuck across from her. शादी होगी तेरी नहीं कुड़माई हुई है कभी मत करना शादी तो कभी मत करना जिंदगी ना बर्बाद हो जाती है ये जो कस्में वादे करते ना एक दूसरे को खुश रखने कुछ साल में सारे ही खत्म मेरी बात मान सिंगल रह ऐश कर नहीं तू बिलीव नहीं कर रहा ना मेरी बात छोटा है ना समझ नहीं आ रही तेरे को बात क्या इस उम्र में ना हरभजन सिंह सब कुछ बड़ा प्यारा प्यारा लगता है आप थोड़ी चाय पी लो जी हाँ मैं पी लेती हूँ भैया तुम पियोगे हाँ तो सीधा मत एक चाय देना कितने की 10 की गरम है ना गरम Next time I go to India, I want to take a train. That's my plan. Land in Delhi, take the अच्छा train. बोल मैं भी तो सुनूं आजकल की यूथ को शादी करनी क्यों है बोल मैं साल भर डोकलाम इंडो चाइना बॉर्डर पे पहरा देता हूँ वहां ना सोचने का ढेर सारा वक्त मिलता है और वहां पहरा देते देते मैंने ये तो समझ लिया है कि हमारी जिंदगी हम सबकी जिंदगी किसी जंग से कम नहीं है हाँ हमारी लाइफ किसी लड़ाई से कम थोड़ी है सबसे पहले पैदा होने की लड़ाई फिर उसके बाद स्कूल फिर पढ़ाई फिर नौकरी और हम जैसों की नौकरी मतलब पड़ोसी मुल्क के साथ लड़ाई हमारे इर्द गिर्द ना लड़ाई और जंग की निशानियां हैं आपको पता है इस ट्रेन की रूट पर दो जंग के मैदान हैं पानीपत और कुरुक्षेत्र अच्छा और फिर शादी करो और अपनी मिसेज से लड़ते बैठो मैंने देखा मेरे परिवार में मैंने तो सोच लिया ये मेरे साथ नहीं होना Oh, this is so nice. You have this married woman who's, well, her personality already seems conflicting. She's the type that would drive her husband insane. It takes a kind-hearted man to really, because I bet his spouse is going to be exactly like that personality of a woman, but it takes someone who's kind-hearted, gentle, sweet, to maintain, like the line from Friends, if you've ever seen it, where Chandler's basically being forced by his fiance or wife at the time what to say, and he's all, no, you are high maintenance, but I maintain you. I feel like that's his job. He's able to bring her down from the edge, because he's just the sweet one. Oh, I like it. वैसे भी एक फौजी को साल Young में guy. 1 महीना मिलता है घर जाने का उसमें भी लड़ते बैठो फिर तो तेरा सही है तेरी ना मम्मी अच्छी होगी मेरी सास की तरह नहीं
मेरे ना ससुर बहुत पहले सुधार गए थे। अब ना मेरी सास अपने बेटे की हर बात में अपना नाक घुसा देती है। अच्छा एक बात बताओ, एक औरत है जो कि बेवा है और उसकी एक ही औलाद है, उसकी तो पूरी जिंदगी उस औलाद के आगे पीछे ही गुजरेगी ना। और जब वो औलाद अपना घर बसाएगा, शादी करेगा, तो फिर माँ को अकेलापन तो महसूस होगा ही ना। तो ना कराए ना शादी, बांध के रखे अपने कुमारे बेटे को अपने दुपट्टे से। ऊपर से दिल्ली चढ़वा दिया 8 महीने पहले। पता नहीं कौन से गांव में जाके रहना पड़ रहा है मुझे उनके साथ। मेरी ना लाइफ टोटल खराब हो गई है सच्ची। आपकी तो लव मैरिज। हाँ, लव अरेंज थी। You know, I find that so strange. Like most of the, I have to always say love marriage and you know this because I assume that for relationships to ever truly work, there has to be respect and love. There has to be both. And from what I understand, is like love marriage is just emotion based. It's not really logically based because that's why it takes you. The man has to be the logical thinker. The women have to be the emotional thinker. That you have both that come together and make a partner. I should say partner because there are some more emotional men who are more flamboyant and get with a more masculine man. I mean, or women who are more masculine who get more with effeminate women. Or yeah, because they're people have interests in different things, but there are always those pairings. And yeah, it's like the Bill Burr joke where it's the lesbian woman at the bar that knows exactly how you feel because she's exactly in the same situation that you are in dealing with your spouse. Yeah, but I've always felt that it needs both. Like, sure, arranged marriages do work, but it's because I think there is more of an understanding of each person's situation. When people are thinking love, they don't think to talk about their positions in the relationship because they're just all emotional, all in emotionally. But yeah, I'm enjoying this. This is actually very intriguing, especially me being engaged and getting married in just a few months from now. Yeah, this is I'm really liking this. जीत ने ना मुझे रिंकू की शादी पे पसंद किया था। फिर तो जी फोन आने शुरू हो गए। मेरी सास तो पीछे ही पड़ गई थी पापा जी के कि हमें तो डिब्बी चाहिए। मैंने की पता कि बहू नहीं चाहिए, कठपुतली चाहिए जिसे सब कह सके वैसे ही करे। मेरी लाइफ है, मैं अपने स्टाइल से जीऊंगी। आपको पता है ना, बंदे ज्यादातर अपनी माँ जैसी लड़कियों को पसंद करते हैं। नहीं मतलब कुछ लोग होते ही हैं प्लस माइनस। आपकी सास ने भी आपको इसलिए चुना होगा क्योंकि आप बिल्कुल उनकी तरह हो। उनको भरोसा होगा कि उनके बाद आप ही उनके घर का ख्याल रखोगे, उनके बेटे का ख्याल रखोगे, सबसे निभा कर चलोगे। गांव भी आपको इसलिए बुला लिया होगा ताकि आप उनके तौर तरीके समझो। चलिए आप उनकी कुछ एक माइनस बात बताइए, मैं उसमें से आपको कुछ प्लस ढूंढ के बताता हूँ। क्या रैपिड फायर? जो मर्जी बुला लो। मम्मी जी ना बड़ी अखड़ू है। वो स्वाभिमानी है, अधिकार जताती है, प्यार करती है, हर चीज पे तो कंट्रोल करती है। सतर्क है, कहीं कोई गलती ना हो जाए। आप भी तो वैसी हो ना, सतर्क, स्वाभिमानी, सबका ख्याल रखने वाली। वैसे ना मम्मा ने, तेरी मम्मी ने मुझे पूरा समझा के भेजा था कि बेटा ससुराल में जाके ना मायके वालों का नाम बहुत रोशन कर। और जब पर मेरी सास कोई मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती तो क्या नाम रोशन करूं मैं? कोई नहीं, मैं भी अपनी लाइफ अब अपने कंट्रोल में ले रही हूँ। सामान लेने जा रही हूँ, फिर दिल्ली वापस। मैं नहीं रहना चाहती। He wants to leave. ओए, तू क्या मुंह फुला के बैठा है? तू तो जा रहा है अपनी मंगेतर के पास। जा, खुश रख उसको। आपको क्या लगता है सारी दुनिया परफेक्ट है और आप ही को प्रॉब्लम पति मिला है? निम्मी और मेरी भी झगड़े होते हैं, वो भी चिट्ठियों में। वहां है आपका फोन वो नहीं चलता, और गुस्से वाली चिट्ठी भेजते ही दोनों को उसके जवाब का इंतजार करना पड़ता है हफ्तों। In an argument, that'd be पर अगली tough. चिट्ठी आने तक गुस्सा भी शांत हो जाता है और प्यार भी डबल। Aw. मैं जब भी उससे गुस्सा होता हूँ ना,
एक लिस्ट बना लेता हूँ 5 प्लस की लिस्ट और 5 माइनस की लिस्ट प्लस में तो उसकी कई Oh, okay. Now this I have to add on to. Never have a minus list. There you write the +5 list and then you have a -5 column. Never put anything in the minus column. Only ever in the plus. If you think of anything that's a minus, put it in the plus too. Because in the end, like, okay, the way I see it is like, in the end, the things that you will see as minuses, you will be the only person that ever knows that about your spouse. You are the only person in the world that will ever be annoyed enough by her or him or whatever to be able to put that minus down, to see that as a negative. And isn't that endearing enough? So let's say, like, my brothers drove me insane because when they'd grab the toothpaste, they'd squeeze the whole bottle. And I feel like you need to roll it from the back. So I'd always correct it and everything. But you would be the one that would find that in your significant other. That toothpaste thing, no one else would ever know anything. I mean, I guess my brothers, all my sister-in-laws are aware of how my brothers grab the toothpaste now. But that's something that they know about them that most other people wouldn't know. I mean, there are little endearing things that you will know that are absolutely annoying, whether he puts the seat down or whether he doesn't change the toilet paper. I don't know why my mind went to the bathroom. I think that's where a lot of the arguments come into play. But yeah, there are a lot of little things there that just, or he's not clean. I mean, I have a mess right here. I try to keep things organized behind me, but I have a mess in front of me. I've been trying to organize it, but there are a lot of little things that, well, she'd be the only one that ever knows that about me. I'd be the only one that ever knows anything negative about her, which in the end, it makes it something worth holding on to. Like, if you've ever seen, what is it? What's the movie? It's got Robin Williams and Matt Damon in it. Good Will Hunting. And he's basically talking about his wife, all the negative things he was saying about her because she had passed away. Robin Williams' wife in the story had passed away. And what he's telling, they're all the little things that only he knew about. They sound absolutely annoying. The fact that she'd wake herself up in the sleep because she'd fart too loud. And then he'd have to take the fall saying, "Oh, I'm sorry, it was me, honey." That kind of thing. It was just, that kind of stuff is so impactful. That changed my mind, seeing that movie, realizing, oh, all those negative things are positive things. But I'm sorry, I just enjoyed the fact that he was making a list. And in my mind, it's just like, never put negatives down. कई अच्छी आदतें लिख देता हूँ 5 से ज्यादा, लेकिन माइनस ढूंढते ढूंढते घंटों बीत जाते हैं। आप भी जीत पराजय वास्ते एक लिस्ट बना दो, फिर देखते हैं कितने बुरे इंसान हैं। पूरी लिस्ट भर जानी है माइनस से। देखते हैं। चलिए अब यहीं सो जाइए, मैं ऊपर सो जाता हूँ। Oh, I really went on a tangent after that. Yeah, I really want to take a train next time I go to India. Yeah, Delhi, then train. Sheesh, this is one of the best things I've seen in a long time, just because it's so simple. Mommy's boy. Well, that explains why he ended up with someone that's just like his mother. हाँ जी। तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं, तेरी फोन का वेट कर रहा था। तुम्हें कैसे पता मैं फोन करूंगी? बस। अच्छा सुनो, कल मुझे स्टेशन लेने आ जाना, कपूरथला। बिल्कुल, तेरी ट्रेन आ जाएगी 4:45 को, मैं आ जाऊंगा 4:15 को। इतनी जल्दी आके क्या करोगे? स्टेशन पे आके झाड़ू मारना है। सुनो, 4:40 से पहले बिल्कुल आने की He's जरूरत gonna है। be there at और आने से पहले 4:15. फोन कर लेना कि कहीं ट्रेन लेट तो नहीं है। ठीक है ना। अच्छा सुन, जालंधर में जब ट्रेन चेंज करेगी ना तो प्लीज संभल के करना, ठीक है? हाँ हाँ, मुझे आता है अकेले ट्रैवल करना। ठीक है तो फिर
गुड नाइट। She's focusing now, noticing all the little nuances. सुनो, He's nagging but caring. वो मम्मी जी को पैरी पोना कहते हैं। अच्छा, ओके, बाय। Oh. तो मर गई नोटबुक? ये तो बड़ा ज्ञानी है। पता है, हम फौजियों की जिंदगी ना बस एक पल से दूसरे पल तक होती है। कब प्लस से माइनस हो जाए पता ही नहीं। हम तो ये भी नहीं जानते कि हम रिटायर होंगे या शहीद। तो हम जितना भी जीते हैं उसमें से हर एक पल से जिंदगी निचोड़ के जीते हैं। पर आप लोग तो सिविलियन हो। Life of a soldier. आप लोगों की लाइफ तो कितनी सेफ होती है। तो आपकी इतनी लंबी लाइफ में न जाने कितने ऐसे पल होते होंगे जिसमें से आप खुशियां और प्यार निचोड़ के जी सकते हो। अब तेरे को और निमी को ना बहुत सारी खुशियां दी और ढेर सारा प्यार। रब ने तो मेरे मंगन तो पहले ही मैंने बहुत कुछ दे दिया। सुन, तू कहाँ तक जा रहा है? कपूरथला। ले, मैं भी तो वहीं जा रही हूँ। सीट नंबर क्या है? टिकटें तो वो ले गए। चल कोई नहीं, स्टेशन उतर के मिलना, ठीक है? मैंने ना तेरा इंट्रो कराना है जीत से। देखना लोग कैसे मिल जाते हैं ना। एक ट्रेन मेरी आगे पीछे हो जाती ना तो तूने मुझे कहाँ मिलना था। मैं भी हर साल लीव पे डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ही लेता हूँ, बस इसी साल वो रूट अलग पड़ गया। शायद आपसे मिलना लिखा था। I have a bad feeling that she's going to end up hearing in the news about him. Because they made a point to show his position and name. Dang, tall guy. तुम्हें किसी से मिलाना है। किससे? उसी की वजह से तो फोन किया मैंने तुम्हें। अच्छा, फिर तो मिलना चाहिए। कौन है ये आदमी? फौजी है। उसका नजरिया देखोगे ना तो कमाल। ए ओए, सुनो, वो हरभजन सिंह कहाँ है? वही जिसका लगेज उठा के आप आए थे, सैल्यूट कर रहे थे जलंधर स्टेशन पे उतर के। आप बाबा जी की बात कर रहे हो क्या? पापा जी 22-23 साल का लड़का था, इसके जितना होगा। हाँ, पर बातें तो बाबा जी वाली कर रहा था। मैडम जी, वो 22-23 साल के थे तब निकल लिए। हाँ, आप किसी और से बात कर रही होंगी। क्या क्या कह रहे हो? ये देखो, ये Aww. देखो मेरी टिकट। सामने बैठा था बर्थ पे। मैंने उसका बैज भी पढ़ा है, ऐसा ही बैज था तुम जैसा। हरभजन सिंह लिखा था उस पे। क्या बात है सर जी, सब ठीक तो है? हैं? आप इनकी बात कर रही थी? हाँ, यही तो है हरभजन। अच्छी That's खासी his बातें wallet. कर रहा था मेरे साथ ये। और आप कह रहे हो Oh. निकलिए, कोई बात है? कमाल है। आप लोगों की गलती नहीं है। इंडिया के लोगों को ना एक्टरों और क्रिकेटरों के अलावा किसी और की स्टोरियां नहीं पता होती। कोई बात नहीं, जाइए, घर जाइए। और हाँ, ढूंढ लीजिएगा इंटरनेट पे।
बाबा हरभजन सिंह भारतीय सेना के एक सच्चे सिपाही थे। उनका जन्म 30 अगस्त 1946 में हुआ और उनकी मृत्यु सिक्किम के नथुला पास में 4 अक्टूबर 1968 में हुई। जब वो 3 दिनों तक लापता रहे, उनके अफसरों ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। फिर वो अपने एक दोस्त के सपने में आए और उनको अपने शव का ठिकाना बताया। सर्च पार्टी को हरभजन सिंह की बॉडी ठीक उसी जगह मिली। ये तो हरभजन सिंह के मृत्यु के बाद की घटनाओं की बस शुरुआत थी। हरभजन सिंह इंडियन आर्मी के वो सिपाही हैं जो मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाते रहे। इंडो चाइना बॉर्डर पर उनकी आत्मा पहरा देती रही। हिंदुस्तानी सिपाहियों के सपनों में आकर हरभजन सिंह दुश्मनों के कई प्लान्स बताते। रात को पहरा देने वाले सिपाही अगर पलक झपकते, उनको एक जोर का चाटा महसूस होता, मानो किसी अफसर ने उन्हें चांटे से जगाया हो। देश ने 26 जनवरी 1969 को हरभजन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया। आर्मी उनकी तनख्वाह हर महीने उनके माता पिता को भेजती। उनके लिए आर्मी ने एक मंदिर भी बनवाया, जहां आज भी भक्त दर्शन लेने और राष्ट्रगान गाने आते हैं। हरभजन सिंह जो सिपाही रैंक में रहते हुए शहीद हुए, उन्हें आर्मी प्रमोट किए जा रही थी। हरभजन सिंह की लीव हर साल सैंक्शन होती और हर साल 2 फौजी उनका सामान उनके गांव कपूरथला ले जाते। उस दौरान उनका कैंप हाई अलर्ट पर रहता। कुछ साल बॉर्डर पर भारी तनाव के समय उनकी लीव कैंसिल भी की गई। समझौतों के वक्त हिंदुस्तानी क्या, चीनी भी उनके लिए एक कुर्सी खाली रखते थे। वो बतौर कैप्टन दिसंबर 2006 में रिटायर हुए। बाबा हरभजन सिंह को वतन का सलाम। Sad. But she continues what she learned. Cooks well. Laugh. Loving, caring, vigilant. Something, or self something. Oh my gosh. I gotta say, I absolutely did love that. The end is kind of very, 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 very sad. Absolutely. But it was just so well done. Honestly, the bus was the best part. I kind of was sad that I don't know. I think it would have been more. I don't know, because they were trying to go with. I'm assuming that that's like a based off a true story, because it looked like there were Wikipedia articles, which is interesting. But I like how they turned it into this, and she got guide from basically the trunk that was beneath her, and yeah. I liked it because the advice and everything, the making a list, and yeah, to quote Friends again, I do not have chubby ankles. Yeah, I am so glad I watched this. This is actually very, very sweet. I went on a few tangents here and there, but something like this, the characters are so well written. Just the images of those guys hiding from her because she's already one of those people that nobody wants to deal with. I absolutely love it. And the fact that he's trying to explain, like, relationships are difficult. You got to work for them. You've got to see the positives, the negatives, and just view them in a different light. I like that because people need to know more of that kind of information. Sadly, not enough people view the world that way. They don't view it through a lens of, like, this person's worthy of something, or it's kind of sad sometimes, but this is definitely a great short film. Oh my gosh, I absolutely love this. It was definitely worth it. I kind of wish it was longer. That entire train ride, I wish there was more. I really do.
I don't mind that there wasn't any action. I don't mind that it was just a soldier who did his duty. It was him continuing to do his duty to make sure couples stay together. They're given so much due to the sacrifice of soldiers. It's funny because you see it constantly. Like even me doing this is a blessing because, well, sure, I work in order to provide, in order to do this kind of stuff too, but at the same time, I'm in a place where I don't need to worry because I am protected. There are people who are willing to make the sacrifice, which is why people need to learn to make things work. Thank you once again for recommending this. It took me a while to get to it, but I think I got to it at the perfect time. I haven't been able to spend much time with my fiance because I've been doing 10 to 12 hour shifts at work, and the second I get home I have to go to sleep and then I have to get up and go. I've been spending absolutely no time with her, and it's absolutely draining on both of us. And yeah, this is just like, keep it going. Yeah, spend time together, do what you can, make sure you have a list of positives, try to think of negatives, and make sure that all those negatives end up in the positive section. That's my list to add to that thing, because only you would ever know that. Like even what she wrote down, the mama's boy, only she would really, well, I guess that's kind of obvious to some people, but really she would be the only one that would actually know it, because she's the one that's constantly around him. Oh, yeah. Plus minus. Absolutely amazing short film. Thank you all for watching. Thank you for recommending it. And yeah, I need to see more stuff like this. This stuff is so impactful, so powerful, and it's just the simplicity of it. Thank you all for watching. Talk to you next time. Doodles!